गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इलेक्टोरल ट्रस्ट्स। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट का कंट्रीब्यूशन जो रिपोर्ट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज़ करता है, उसमें देखा जा रहा है कि जो डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इलेक्टोरल ट्रस्ट से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्क्रैप किया है। ठीक है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग इंडिया में। ये इंटरमीडियरीज की तरह एक्ट करती हैं, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस उठाती हैं ये इंडिविजुअल्स और कंपनीज से, और उसको फिर जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट में अंदर रजिस्टर्ड है। इस कंसेप्ट को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और ईसीआई जो है वो रेगुलेट करता है इलेक्टोरल ट्रस्ट को और उसकी फंक्शनिंग को। ठीक है। इसकी फंक्शनिंग जो है वो गवर्न की जाती है इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 द्वारा। अब कौन डोनेट कर सकता है इसमें? कोई भी इंडियन सिटीज़न या डोमेस्टिक कंपनीज़ या डोनर्स जो हैं उनको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी करनी पड़ती है, और कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी बताना पड़ता है। कौन इसमें डोनेट नहीं कर सकता है? फॉरेन कंपनीज़ या इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट कंपनीज़, कोई भी एंटिटी जो कि प्रोहिबिटेड है आरपीए के अंदर। ठीक है। अब इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ ये हैं कि डोनर के नेम तो डिस्क्लोज होते हैं, लेकिन कितनी स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट की गई है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है डाटा। अब इसमें लार्ज कॉरपोरेशन जो हैं कॉरपोरेशंस हैं वही इस ट्रस्ट सिस्टम को डोमिनेट कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा इसमें डोनेशन देते हैं। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो फंड का है वो रूलिंग पार्टीज़ को ही मोस्टली जाता है या फिर बड़ी पार्टीज़ को ही जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज कॉरपोरेशंस ही जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है वो इन्फ्लुएंस का बढ़ रहा है। ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम देखें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में इसमें, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट में जो है उनको डिस्क्लोज तो करने पड़ते हैं नेम्स ऑफ डोनर्स, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अनोनिमस डोनेशंस अलाउड थी। इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो कहता है कि कितना जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो डिस्क्लोज करो। पब्लिक को पता होता है कि कितनी पार्टी को कितनी फंडिंग दी जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो है कोई ऐसा डिस्क्लोजर नहीं होता है। ठीक है। इलेक्टोरल ट्रस्ट जो हैं वो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 द्वारा गवर्न है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सिर्फ बैंक्स द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है उसमें फॉरेन डोनेशंस अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन फॉरेन कंट्रोल्ड एंटिटीज़ जो रजिस्टर्ड हैं इंडिया में वो भी परचेज कर सकती हैं फॉरेन जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अबैटमेंट टू सुसाइड। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी को ज़रूरत है कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और कोर्ट्स को सेंसिटाइज करें अबैटमेंट टू सुसाइड के केसेस में। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मिसयूज़ नहीं होना चाहिए इस प्रोविज़न का। कई बार क्या होता है कि कुछ जेन्युइन केसेस जो होते हैं जो लीगल थ्रेश होल्ड मीट कर रहे होते हैं, और उनको इस प्रोविज़न को मिसयूज़ कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज ग्रीविंग फैमिलीज़ जो हैं डिसीज़ की उसको उनको अपीज़ करने के लिए। तो अभी हुआ क्या था कि अभी एक बैंक मैनेजर को एक्विट किया गया था, जिसके ऊपर जो है अबैटमेंट टू सुसाइड का केस डाला गया था कि उसने उस एक बॉरोवर को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उस बॉरोवर ने अपने लोन रीपे नहीं किए। तो कोर्ट ने कहा कि ये बेसलेस प्रोसिक्यूशंस जो हैं उससे इस लीगल प्रोसेस का अब्यूज़ होता है। ठीक है। तो सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी जो है वो कहता है कि अबैटमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन को इंस्टिगेट करना कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए, दूसरों के साथ मिलकर कंस्पायर करना कि वो ऐसा एक्ट करे, फिर इंटेंशनली एड करना उस पर्सन को कि वो ऐसा कुछ एक्ट करे। ठीक है। सुसाइड का तो डायरेक्टली इंस्टिगेट करना या डिसीज को एड करना जो है उसी को हम अबैटमेंट टू सुसाइड मानते हैं। तो इस ऑफेंस को सेशंस कोर्ट में ट्राई किया जाता है। ठीक है। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक जो है कन्विक्शन रेट जो है अबैटमेंट टू सुसाइड का वो 17.5% है, जबकि जो एवरेज जो है ओवरऑल कन्विक्शन रेट है बाकी के सारे आईपीसी क्राइम्स का वो लगभग 70% है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कम कन्विक्शन रेट है अबैटमेंट टू सुसाइड का। ठीक है। तो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड होता क्या है, क्या क्या स्टैंडर्ड क्या है होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में बोला कि अननेसेसरी प्रोसिक्यूशंस मत करो, वर्क प्लेस रिलेटेड अगर कोई क्राइम है उसको अबैटमेंट ऑफ सुसाइड में मत डालो। ठीक है। तो हायर प्रूफ बार ऑफ प्रूफ जो है वो रिक्वायर्ड होता है,
रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए एक डिसीज्ड पर्सन में और अक्यूज के बीच में, ठीक है। तो एविडेंस को ये शो होना चाहिए कि अक्यूज सच में चाहता था कि वो पर्सन सामने वाला जो है वो सुसाइड करे। प्रोसिक्यूशन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करे कि डायरेक्ट और अलार्मिंग इंसाइटमेंट था या एंकरेजमेंट था अक्यूज द्वारा, ठीक है। एक्ट जो है वो उस पर्सन को सच में, डिसीज्ड पर्सन को सच में उस पोजीशन में डाल के खड़ा करे कि वो सुसाइड करे, तभी माना जाएगा अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का केस। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ रोड मैप टू अ हेल्दी नेशन बाय 2047। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की जो एस्पिरेशन है कि अगर वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है, उसके लिए उसे हेल्थ और प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशन पर ध्यान देना होगा और रॉबस्ट हेल्थ सिस्टम्स इमर्ज होने चाहिए 2025 तक, अगर हम ये अचीव करना चाहते हैं। तो पहला तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ताकि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सके। हायर पब्लिक फाइनेंसिंग जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है हेल्थ में। इमीडिएट एफर्ट्स लाने पड़ेंगे ताकि शॉर्टेज ऑफ हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स को जो है वो एड्रेस किया जा सके। आयुष्मान भारत एक टेम्पलेट बनी ट्रांसफॉर्मेशन की। अब जैसे प्राइमरी केयर आर्किटेक्चर जो है अपग्रेड होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है वल्नरेबल ग्रुप्स की वो बढ़े, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस हो, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेट की जाए, ठीक है। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जो है वो हेल्दी इंडिया के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि डेटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर अवेलेबल होना चाहिए। राइजिंग बर्डन जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का, उसकी एक्यूरेट ट्रैकिंग होनी चाहिए, ट्रेंड्स और रिस्क फैक्टर्स की। रैपिड राइज देखने को मिल रहा है जो जूनोटिक डिसीज़ में, उसके लिए रियल टाइम सर्वेलेंस डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करें हम, ताकि इन्फेक्शियस डिसीज़ की सर्वेलेंस हो सके। वेस्ट वाटर सर्वेलेंस और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की मॉनिटरिंग करना भी एक रूटीन होना चाहिए। तो डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट डेटा ये एक्सेसिबल रहे सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। अब कई बार क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने डेटा की इंटीग्रेशन नहीं कर रहा है। डिजिटल सिस्टम्स जो है वो प्राइमरी केयर और पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स को जो है वो कनेक्ट करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आई जाए इंडियन हेल्थ डेटा में, और क्राउड सोर्सिंग जो है वो भी इनेबल की जाए आउटब्रेक सर्वेलेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो अपनी एनुअल मीटिंग होल्ड कर रहा है, ठीक है, जिसको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। ये कंसेप्ट जो है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का WEF ही लेकर आया, और ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स जो होते हैं वो इसमें एंगेज करते हैं डायलॉग के थ्रू, डिबेट के थ्रू, कमिटमेंट्स के थ्रू। और इसको ओरिजिनली हम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम कहते थे, ठीक है। इसमें जो है पार्टनरिंग कॉरपोरेशंस जो है वो इसको लार्जली फंड करती हैं, और जो इसके हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है, और इसके ऑफिसेज जो हैं वो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने 20th रेजिंग डे सेरेमनी जो है NDRF की, उसको अटेंड किया है। तो NDRF है क्या? इसको इस्टेब्लिश किया गया सेक्शन 44 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर, ताकि एक तरह से स्पेशलाइज्ड रिस्पांस दिया जा सके नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स के अगेंस्ट। तो 2006 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब मल्टी स्किल्ड हाईली स्पेशलिस्ट फोर्स है ये, बहुत ही एक्टिव रहती है नेचुरल डिज़ास्टर्स को रिस्पॉन्ड करने में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है उन्होंने कहा है कि जो सक्सेस है स्टार्टअप इंडिया मिशन का, उसको हम की फंडिंग मैकेनिज्म्स को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, खासकर फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम में को। तो फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम जो है, इसको अप्रूव और इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में 10,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ, ताकि मच नीडेड बूस्ट मिल सके इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को। ये स्कीम डायरेक्टली तो इन्वेस्ट नहीं करती है स्टार्टअप्स में, लेकिन कैपिटल प्रोवाइड करती है सीबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को, ठीक है। सिडबी जो है उसको मैंडेट दी गई है कि वो ऑपरेट कर सके इस फंड को। सिडबी क्या है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर 1990 में बनाया गया प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो प्रमोशन, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट पर ध्यान देता है MSME सेक्टर की। MSMEs को फंड्स एक्वायर करने में हेल्प करता है। सिडबी जो है वो क्लीनर प्रोडक्शन और एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर भी जो है वो अपनी प्रमोशन करता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is electoral trusts. This topic is important for your polity section. So as per the electoral trust contribution reports which have been released by the Election Commission of India, donations to political parties have seen a significant rise through electoral trusts since Supreme Court has decided to scrap electoral bond scheme in February 2024. So what are these electoral trusts? So these are non-profit organizations which have been created to facilitate transparent political funding in India. They act as intermediaries. They collect voluntary contributions from individuals or companies and they distribute them to registered political parties. So any company which is registered under Section 25 of Companies Act can seek approval to form an electoral trust. This concept was introduced under the Income Tax Act, and Election Commission of India regulates electoral trusts, and their functioning is governed by Electoral Trust Scheme 2013. Okay, so who can donate under the electoral trust? Indian citizens, domestic companies which are registered under the Companies Act, donors. They are required to disclose their identity and the amount contributed. But who cannot donate? Foreign companies or individuals, government companies, entities which have been prohibited under the RPA Act, like the trusts which receive foreign funds. But what are the issues in this? So, while trusts have to disclose the donor's name, the specific amounts which are donated to each political party is not publicly available. We have seen that large corporate donors are dominating this trust system. A significant portion of the funds also go to only ruling party or major political parties. Okay, so how is it better than electoral bonds? So in electoral trusts, they are legally required to disclose the name of donors and the amounts received to the ECI or Election Commission of India. Electoral bonds, they allow, on the other hand, anonymous donations. Electoral trusts mandate the disclosure of the contributions disbursed to political parties, so as to ensure that public knows which party has received how much funding. But electoral bonds do not require such disclosures. Electoral trusts are governed by Electoral Trust Scheme of 2013, but electoral bonds are just managed by banks. Also, electoral trusts prohibit foreign donations, but electoral bonds do not explicitly restrict foreign controlled entities registered in India from purchasing the bonds. Okay. So the next topic is abatement to suicide or abatement of suicide. This topic is important for your social issues. So Supreme Court has stressed that there is a need to sensitize investigative agencies and courts regarding the cases under Section 306 of IPC, which deals with abatement to suicide. Okay, so this court has highlighted that there is misuse of this provision and it should be avoided. And genuine cases which meet the legal threshold, they should be prosecuted, but provision should not be misused to appease the grieving families of the deceased. So what was happening is that we were seeing that cases in which a bank manager was accused of abetting the suicide of a borrower who did not repay his loan, and this was classified under the abetment to suicide case. So, what is the abatement of suicide in criminal law? Under Section 107 of the IPC, abatement involves instigating a person to perform an act, conspiring with others to commit an act, and intentionally aiding an act through legal action or illegal omission. To prove abatement of suicide, it must be demonstrated that the accused directly instigated or aided the deceased in taking their life. Okay, it should not be an indirect or uh, um, it should not be an indirect act. So, abatement of suicide is an offence which is tried under Sessions Court and is a cognizable, non-bailable, and non-compoundable crime. As per the NCRB data, conviction rate for abatement of suicide is 17.5%, whereas for all other IPC crimes, the overall conviction rate stands at about 70%, which means that there is low conviction rate for abatement of suicide compared to other crimes. So Supreme Court has quashed the case of abatement of suicide recently in October 2024, and it has said that unnecessary prosecutions in workplace related suicide cases should be avoided. Okay, so a higher bar of proof has been required in cases where the relationship between the deceased and the accused is official. Evidence must show that accused intended to cause this suicide, and prosecution must demonstrate direct and alarming incitement or encouragement by the accused. So, act must be intended to push the deceased into that position that he was forced into taking his life. Only then abatement of suicide can be proved. Okay.
So the next topic is India's roadmap to a healthy nation by 2047. This topic is important for your governance section. So India's aspiration to become an economically developed nation hinges on the health and productivity of its population. To achieve this, robust health systems must emerge by 2025. So, what are the key pillars for a healthy India? So, universal health coverage is important, which should ensure financial protection and extensive service coverage. Higher public financing is also essential. Immediate efforts must be made to address the shortage of highly skilled doctors. Okay, we need to upgrade our primary care architecture, financial protection for vulnerable groups, enhanced health infrastructure, integration through digital health technology. Okay, so data driven decision making for a healthy India is also important. So data must be available at district and block levels. Rising burden of non communicable diseases and mental health disorders require accurate tracking of trends and risk factors. There is rapid rise in zoonotic diseases, which calls for extensive and real time surveillance data. Big data analytics will also be needed at the heart of infectious disease surveillance. Wastewater surveillance and antimicrobial resistance monitoring must also become a routine now. Okay, so how digitally integrated healthcare for a healthy India can contribute for a healthy India. So diagnostic and treatment data must be accessible across healthcare facilities. We are witnessing that there is lack of private sector integration, which is disrupting the continuity of care. Digital systems must connect primary care and publicly funded health insurance programs also. We should also apply artificial intelligence to Indian health data. Digital tools can also enable crowdsourcing for outbreak surveillance. Okay. So the next topic is World Economic Forum. This topic is important for your international relations. So World Economic Forum is holding its annual meeting in Davos, that is in Switzerland. So World Economic Forum was established in 1971 as a not-for-profit foundation by German engineer and economist Klaus Schwab. So it has introduced the concept of stakeholder capitalism also, under which organizations and leaders engage through dialogue, debate, and commitments for action. Originally, it was known as the European Management Forum. It is largely funded by its partnering corporations. It is headquartered in Geneva, that is in Switzerland, and it has offices in New York and San Francisco as well. Okay, apart from that, in China and Japan, there are also offices. So the next topic is National Disaster Response Force. This topic is important for your governance section. So Union Minister of Home Affairs has attended the 20th Raising Day ceremony of the NDRF in Vijayawada, Andhra Pradesh. NDRF was established under Section 44 of the Disaster Management Act. It is aimed at specialized response to natural and man-made disasters. It was initially established in 2006 with 8 battalions. It is a multi-skilled and highly specialized force which is capable of dealing with all types of natural and man-made disasters. It has been very active in responding to natural disasters under the multilateral and bilateral agreement at international level. It also functions under the purview of the Ministry of Home Affairs, and it is headed by a Director General. Okay. So the next topic is Fund of Funds for Startup Scheme. This topic is important for your economy section. So Union Minister for Commerce and Industry has recently emphasized that after the much of the success of the Startup India's mission can be attributed to key funding mechanisms, particularly the Fund of Funds for Startup Scheme. So this scheme was approved and established in 2016 with a corpus of about 10,000 crore rupees. It aims to provide much needed boost to the Indian startup ecosystem and enable the domestic capital access. This scheme does not involve direct investment into the startups, but it provides capital to SEBI registered alternative investment funds. SIDBI has been given the mandate of operating through this fund, through the selection of suitable daughter funds and overseeing the dispersal of committed capital. Okay, so what is SIDBI? SIDBI was established under an Act of Parliament in 1990. It is the principal financial institution engaged in promotion, financing, and development of the micro, small, and medium enterprises sector. It helps in MSMEs in acquiring the funds which they require to grow the market, develop and commercialize their technologies and innovative products. Besides focusing on the development of MSME sector, SIDBI also promotes cleaner production and energy efficiency. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.